चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी आपको तस्वीर एक नज़र आ रही है, एक फोटो नज़र आ रही है और एक मोनोलोगो नज़र आ रहा है। तो जो बोलने वाला टेस्ट है देलिया दोस्त का, उसमें पहले दो ये तारियास हैं। मोनोलोग होता है कि किसी टॉपिक के ऊपर आपने बात करनी है 3 से 3.5 मिनट, और फोटो पे आपने ये जो 7 चीजें होती हैं हमेशा यही क्वेश्चंस होंगे, इनका आपने जवाब देना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं अभी ये जो monólogo है उससे। तो monólogo है हमारे सामने sobre los medios de comunicación। आपने जो medios de comunicación है, जो राब्ता करने के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनके बारे में आपने बात करनी है। तो हमें ये 5 चीज़ें बता रहे हैं कि आपने qué medios de comunicación usas en tu vida diaria। अपनी नॉर्मल रूटीन में, आम दिनों में कौन से medios de comunicación इस्तेमाल करते हो। ¿Prefieres leer noticias en internet o periódicos? न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हो या इंटरनेट से जो अखबार है वो पढ़ना पसंद करते हो, जो खबरें हैं। ¿Por qué? क्यों? ¿Crees que la televisión es todavía importante hoy en día? तुम्हें क्या लगता है कि टेलीविजन आज भी इंपॉर्टेंट है, अहम है? उसके बाद usas las redes sociales para informarte। क्या इंफॉर्मेशन के लिए तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो? ¿Cuáles? कौन से वो redes sociales हैं? ¿Cómo te imaginas los medios de comunicación en el futuro? तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर में ये किस तरह के होंगे जो medios de comunicaciones हैं? जराया ब्लाग मेरे ख्याल में इनको कहते हैं, श्योर नहीं है मैं, जराया ब्लाग ही कहते हैं इनको। जी जी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट हमेशा हमने इस तरह से करना है, voy a hablar sobre। ठीक है, फिर जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर कहेंगे voy a hablar sobre los medios de comunicación। En mi vida diaria utilizo muchos medios de comunicación, como por ejemplo internet, teléfono móvil, teléfono fijo de mi casa y muchos más. Prefiero leer las noticias por internet en vez de en el periódico, porque en internet las noticias se actualizan cada poco tiempo y son gratis. En cambio, los periódicos o la mayoría de los periódicos son de pago, y además las noticias que vienen en los periódicos son del día anterior. Creo que la televisión sigue siendo importante, pero no igual que antes. Antes, la televisión era el único o uno de los pocos medios de comunicación que había. Radio y televisión, y tampoco había mucho más. Y Eh, tenía mucha importancia. Pero hoy en día, aunque es importante, pero con la entrada o con la llegada de YouTube, hay mucha gente que prefiere ver los programas de la televisión en YouTube o las noticias también por YouTube. O sea, es importante, pero no igual que antes. Sí uso redes sociales para informarme. Por ejemplo, utilizo mucho la red social X, el Twitter, que antes se llamaba, y también Facebook. Eh, Son uno de mis redes sociales favoritos y paso mucho tiempo en estos. Bueno, y además de TikTok, que también utilizo mucho para informarme. Me imagino que en el futuro los medios de comunicación serán más rápidos, más modernos, más inteligentes que ahora, porque con la llegada de la inteligencia artificial todo está cambiando rápidamente। तो ये हमारा मोनोलोग था। इसमें आराम से बाद में जब आप इसको सुनेंगे, आराम से इसमें जो चीजें आपको पसंद आए वो अपनी पिक कर लें, जो मुश्किल लगे वो छोड़ दें। खुद आसान चीजें जो है ना उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और अब जल्दी से मैं फोटो के ऊपर जो है ना वो थोड़ा
थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये जो 7 क्वेश्चंस हैं इसी तरतीब में हमने करने हैं। तरतीब अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसी तरतीब में अगर आप करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। Voy a hablar sobre esta foto. En la foto puedo ver 4 personas, un hombre, una mujer y 2 hijos, 2 niños. Están paseando en el centro comercial o están de pie, जो भी आप यहाँ पे बोल दें, क्योंकि हमने बताना होता है कितने हैं और खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। En el lado derecho o en mi lado derecho puedo ver a un niño que es muy guapo, tendrá unos 7 años, es rubio, tiene los ojos pequeños y la nariz grande. Al lado de este niño está un chico que tendrá unos 35 o 40 años, es alto, guapo, pelo corto y las orejas grandes. Al lado de él está una chica que también tendrá más o menos la misma edad, pelo largo, liso y lo tiene suelto. Tiene los dientes grandes. Y a su derecha está otro niño, tendrá unos 10 años, es rubio, pelo corto y las orejas grandes. Este niño lleva una camisa blanca y unos pantalones de color azul y unas zapatillas deportivas. La mujer lleva una blusa y debajo una camiseta blanca y unos pantalones de color azul y unas zapatillas blancas. El hombre lleva una camiseta blanca y encima lleva una camisa de color azul y un pantalón también de color azul. Lleva unas zapatillas marrones. El otro niño lleva una camiseta de rayas horizontales y un pantalón azul y unas zapatillas blancas. Están en un centro comercial, hay muchos objetos, como por ejemplo muchos escaparates de tiendas. Escaparates कहते हैं जो चीजें नजर आ रही हैं बाहर से. Muchos escaparates de tiendas, mucha gente en el fondo de la imagen, una escalera eléctrica, mucha gente con bolsas de compra. Esta familia también lleva 3 bolsas de compra en la mano. Están de compras y ahora mismo están paseando por la planta baja de este centro comercial. En cuanto a la relación, creo que son familia, son padre, madre y los 2 hijos. Están felices, están contentos y felices porque están disfrutando del momento en familia. Antes de estar aquí, han aparcado su coche en el parking del centro comercial y después van a ir a casa para descansar. तो ये एक आसान या बहुत आसान तरीका है अगर हम इस तरह से हर जुमले को याद कर लेते हैं कि किस तरह से रोपा का मैंने ये va बोलना है, जो भी कपड़े पहने हुए हैं lleva una camisa, lleva una camiseta, están en un centro comercial, hay जो चीजें हैं उनके इर्द गिर्द उनके लिए यूज करूंगा hay una escalera eléctrica, hay mucha gente, hay escaparates. वो क्या कर रहे हैं? Están paseando, están hablando. En cuanto a la relación, son familia, están disfrutando y, están contentos y felices porque están disfrutando del momento. Antes han ये चीज y después van a ir a. तो अगर इस तरह से हम ये याद कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो ये हमें सबसे आसान पार्ट हमें लगेगा। इसके बाद एक तीसरा हिस्सा होता है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो होता है एक डायलॉग करना होता है हमने उस जो एग्जामिनादोर या एग्जामिनादोरा होती है उसके साथ, और वो डायलॉग होता है जो फोटो होती है उससे रिलेटेड। अगर फोटो एक शॉपिंग मॉल की है तो जो डायलॉग होगा वो एक खरीदार का और एक शॉपिंग जो शॉपकीपर है उसके दरमियान होगा।
तो उसमें आपस में हमने बात करनी होती है, मुझे ये चाहिए, ये साइज चाहिए, ये कलर चाहिए, और एंड पे डिसाइड करना होता है पेमेंट कैसे करनी है। तो ये मैं आपको जो है ना वो अ, खैर उसमें भेजने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो डिस्कस कर सकें। वो और वो सबसे आसान होता है, इस वजह से हम उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं जो है ना वो इन्वर्तीर करते। उसके ऊपर मेन इंपॉर्टेंट जो स्पीकिंग वाला है वो ये मोनोलोगो और ये फोटो की डिस्क्रिप्शन। तो अभी ये मैं अभी जो कम से कम जो मैंने अभी बोला है वो मैं अपलोड करके इंशाल्लाह आप लोगों को उसका लिंक भेज देता हूँ। भले, तो मैं वही आ रहा। सर एक क्वेश्चन। जी।